This is NDTV, and you're watching NDTV 24/7. January 26th, India's Republic Day. 29th January, beating the retreat. January 30th, Mahatma Gandhi's death anniversary marked as Martyrs' Day. But there's another date around this cluster that slipped from our memory. January 20th, the death anniversary of a different Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, one of our history's most moving and relevant figures. A frontier Gandhi who forged a policy of peace in the midst of a violent culture. A man who spent 1 out of every 3 days of his life in jail. A man whose story seems even more improbable in the midst of the violent headlines that emerge from this region. Bacha Khan's story is often forgotten, but this time we have 2 concrete events that bring the great Pathan back in the news. In Delhi, a group of young people inspired by Bacha Khan's Khudai Khidmatgar movement gathered to revive their version of it. And miles away in New York City, an award-winning Canadian filmmaker gets ready to release a work of passion, a full-length documentary film on Khan Abdul Ghaffar Khan to audiences in India. भारत की सरज़मीं पर वो इंकलाब आया, चरखे के एक वली से संसार जगमगा। मोहम्मद कलीमुल्लाह, ये मेरे साथ सबसे पहले आदमी हैं। Dayan Hussain Sahab, advocate. This was an unusual program, a recruitment drive to induct 50 new members into a movement inspired by the ideals of the Khudai Khidmatgars, Khan Abdul Ghaffar Khan's potent, non-violent army of 10,000 Pathans, who in the 1930s fought British rule through satyagraha, sacrifice and social reform. Their leader, a man from Utmanzai in the Peshawar Valley, would be known as the Frontier Gandhi. Ghaffar Khan organized a band of volunteers, the Khudai Khidmatgar, the servants of God, to serve the country and the community. ये खुदाई खिदमतगारों का लिबास था जब अंग्रेजों के खिलाफ वो सत्याग्रह कर रहे थे, और ये रंग, उनकी कमीज भी लाल थी, उनकी सलवार भी लाल थी। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजाद, ये नारा था हमारे बादशाह खान का, तो हम उसके साथ फौज में चलते थे लाल कपड़े पहन के। It's extremely fortunate to have been able to gather together just approximately 63 Khudai Khidmatgars, many of them over the age of 100 years. This was the first time that anyone had come to them and who wanted to tell their story. So they were somewhat incredulous. And when I asked them, why on earth did you put down your weapons? And they all said, without exception, it was him. So I think it really comes down to the power of example. For example, 1 out of 3 days of his very long 98 years that he lived was spent in solitary confinement. सलमान भाई, आज हम लोग ने ये फैसला किया है क्योंकि आज सरहदी गांधी की 23वीं पुण्यतिथि है, और जगह क्या है जहां कुछ लोगों ने ये समझा था कि वो गांधी जी के शरीर को मार के और उनको खत्म कर देंगे, और जिनके सामने हम ये प्रॉमिस करेंगे, जो छोटी सी एक ओथ है, वो तारा गांधी जी है, वो गांधी जी की पोती है। हम आज से अपनी मेंबरशिप ड्राइव शुरू कर रहे हैं। हम अगली 20 जनवरी तक
5000 मेंबर पूरे देश के साथी मिलके बनाए। ये हमारी ओथ है खुदाई खिदमतगार को जो एक लेनी चाहिए और फिर उस पर चलना चाहिए। In 2009, Faisal Khan, a grassroots activist with the National People's Alliance movement, thought of adapting the Khudai Khidmatgars to today's Indian context, and it caught the imagination. I am a servant of God. I am a servant of God. And as God... These young people do not have to confront a brutal colonial regime. Their lives are not at risk. But they want to use the strategies of their earlier heroes to face a new set of challenges. Badshah Khan leads the way. A devout Muslim, he wanted Pashtun women to study and sent his own teenage daughter abroad for an education. The Khudai Khidmatgars cite this example to inspire women like Tanzila, who has joined the movement to further her community's fight for daily wages. बर्तन धोते हैं, झाड़ू पोछा, आदमी सब परेशानी से काम कराता है, करना ही पड़ता है, वही 200, 300, 400 में। मियाँ रिक्शा चला रही है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है हमारे फ्रंटियर ऑफ गांधी, उन्होंने ये शुरू किया था, लेकिन उनकी डेथ के बाद में वो ग्रोथ नहीं मिल पाई। तो उस चीज़ का रिवाइवल है ये एक तरह से। मुझे लगा कि मुझे भी इस चीज़ का हिस्सा बनना चाहिए। हमारी संगठन का सिर्फ मकसद ये है वो दबे कुचले लोग उनके लिए वर्क करें। स्टूडेंट लेवल पे मैंने खुद से ही अपने पर्सनली अपने हॉस्टल से कलेक्शन करके मैंने गरीबों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट करवाया। तो अच्छा छोटे मोटे काम जो कि कभी ब्लड डोनेशन करते हैं और हमें करने चाहिए। तकरीबन 7-8 साल पहले मैं फैसल खान को मिला अम्बाला में ही। फिर इन्होंने मुझे सबसे पहले सरिता महेश के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने एक पूरे गांव में जो खेतों को एक कर दिया, यानी कि जो मेंढ होती है उनको ख़त्म कर दिया, आपसी भाईचारा बनाया। गांव वाले लोगों ने इनको बहुत पसंद किया। लोगों की ये आपसी समझ बढ़ गई है। मेरे गाँव के लोग हैं जो वो इस चीज़ से थोड़ा ऊपर उठ गए हैं। वहाँ पे ये जो आपसी धर्म जात पात की बातें हैं, इन चीज़ों से वो थोड़ा उभर गए हैं। Mostly I belong from a state is Assam. There are lots of poor peoples, backward people, STs and STs. So I want to do something for the people. On the ground, the Khudai Khidmatgars have already begun their work. Here's one example. The Batla House Thobi Ghat near the Jamia Millia Islamia University campus on the banks of the Yamuna. This sprawling basti is in the midst of a familiar urban fight. Those who live here work on daily wages, many as domestic helps in homes in adjacent colonies like Batla House, in the news recently for a controversial encounter, but their own homes considered illegal. These people have votes but nothing else. When the Yamuna flooded over last monsoon, the authorities turned a blind eye. The Khudai Khidmatgars rushed in for flood relief work. Now they're working with the authorities on a proper rehabilitation plan. What makes their work potent is that their own members live here. गरीबों की हेल्प करना, मैं खुद एक गरीब हूँ, तो मुझे धीरे धीरे जब भाई साहब का नंबर पता चला, तो फैसल भाई का, तो टेंट में मैंने बहुत हेल्प की थी। बाढ़ में से जैसे कोई रह गया उसे निकालना, कुछ सामान वामान बांटने हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप बेफिक्र रहिए। मजदूरी ज्यादातर लोगों को कितनी मिलती है? ऐसा है, अगर आदमी काम जानता है तो 200 रुपये मिलती है, नहीं जानता 150 रुपये, लेकिन वो परमानेंट नहीं होती। 10 दिन काम किया, बाढ़ में अब जाके मैंने काम किया है। ये देखिए कितनी गंदगी है। अब इसमें से आदमी निकलेगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे तो कौन पड़ेगा? मालिक थोड़ी बीमार पड़ेगा, वो तो एसी में सो रहा है। बच्चे काफी बीमार, बहुत, कितने गड्ढे में गिर जाते हैं। हम कई रात में हम भी गिर जाते हैं गड्ढे में। देखिए ये रास्ता बना है। बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे? बाथरूम ऐसे ही बने हैं, ये देखिए फटे पुराने, ये बाथरूम बने हैं। ये बाढ़ का ही टूटा पड़ा है पूरा। अब इसमें अगर हम सोचते हैं कि मलबा डलवाते हैं, रास्ता बन जाए आने जाने का, तो पुलिस डंडे मारती, डर के हमारा झुग्गी नहीं बनाते। उसमें काफी पैसा आ रहा है। अब पैसे क्या, गरीब तो गरीब ही रहेगा। पुलिस वाला चोर भांग लगा देता है। यही बर्तन धुलना, यही नहाना। ये आपके नेबरहुड में चल रही हैं। एक इस मूवमेंट से जुड़कर आप लोगों को भी इसका अवेयरनेस आया है? अवेयरनेस तो मैं पहले से थी। हमें खुदाई खिदमतगार के साथ जुड़ने के बाद
एक मौका मिला है कि हम और अच्छी तरह से काम कर सकें यहाँ पे। अवेयर तो हम पहले से भी थे, लेकिन हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था इनके लिए काम करने का। Bacha Khan, my father, and Gandhi ji were very, very close. We often used to see them sitting down closely, whispering to each other, talking to each other. They were so more or less, alike in their ideas, in the way they lived. So simple they were both. Their clothes, their food, everything were more or less the same. Together, this 5 feet 4 inch Hindu and the 6 feet 4 inch strapping Pathan made for interesting frames, striking pictures. Neither could accept partition. One Gandhi shot down by a fellow Hindu, the other jailed for 16 years by a state he had to swear allegiance to. But both irrepressible, their charisma and command unparalleled. Their deep bond a constant reference point in the troubled vortex of identity politics, a theme as alive today. Organization of the Muslim community in Kerala is really very wonderful. They are working among the society. We know that the Muslim is about 25%, about 25% of the Muslim community in Kerala, and rest of 5% among Christian community, and rest of them are Hindu community. But we can see such a communal harmony is going on there. As a student, the coming educational students, we should fight against that people who are making insecurity in the society. As a student and as a society, the Khudai Khidmat Khan, we know that Mahatma Gandhi, he has a good connection with Khan Abdul Ghaffar Khan. They follow the principles of communal harmony and the love and the peace in the society. That's why I joined the society. जनरली लोगों का परसेप्शन ये है कि भाई मुसलमान बहुत लड़ने को तैयार रहते हैं, गुस्सा उन्हें बहुत रहता है, लेकिन जब खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में एक कोई भी आनी पड़ेगा उसका परसेप्शन और नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूँ कि एमपी से बिलोंग करता हूँ, इतनी ज़्यादा एजुकेशन और रिचनेस नहीं है वहाँ पे, लोग अपनी ज़रूरत पूरी करने में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं। 70% मुस्लिम फैमिलीज हैं जो बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं, उससे इनको टीबी होती रहती है, बीमारियां होती रहती हैं। और जो भी हमारे एमपी में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, जमात हिंद या मिलादुन नबी जमात, वो उनका वो जो बातें सोसाइटी में लेके आते हैं उससे हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा इससे मकसद यही है कि हम पूरे मुल्क के अंदर शांति फैलाएं और मुसलमानों को जो उनका हक है वो दिलाएं, क्योंकि सिविल सोसाइटी के अंदर मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए वो आज़ादी के बाद से आज तक नहीं मिला। Among the new recruits, Maulana Fateh from Saharanpur. His views trigger a heated argument. He's part of a familiar trajectory that reads in all events an attempt to oppress Muslims. आपने भी देखा असीमानत ने खुद उसके अखलाक से मुतासिर हो गया, एतराफ इस बात का। तो आप मुझे कह रहे हैं कि इस पूरे एक भी आतंकवादी हिंसा के पीछे किसी भी मुसलमान का आज तक हाथ नहीं हुआ आजादी के बाद आज तक, और ये इस बात को साबित कर दिया असीमानंद ने। नहीं, असीमानंद ने समझौता ब्लास्ट का नहीं पूरे बिल्कुल नहीं। आप जो ये कह रही हैं वो लगातार मैं कहता हूँ कि ये कोई हम सिर्फ अमेरिका को और मुसाद को इल्जाम नहीं दे सकते, वो सच्चाई को हमें, मैं एक खुदाई खिदमतगार या एक सच्चा मुसलमान होने हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल इसको नहीं नकार सकता कि नहीं सारा मुसाद करा रहे। मुसलमानों में एक तबका है जो सोचता है कि हम तलवार और डंडे के बल पे कर लेंगे। मैं उनको मुसलमान बन के कहूंगा कि नहीं, तुम ये जो कर रहे हो गलत है, ये कहीं से इस्लाम में नहीं है। Faisal Khan steps in to cool tempers. He's clear that civic society can only succeed if it tries to engage. कि अगर गांधी जी उस दिन 30 जनवरी को घायल हो जाते और वो उनकी हत्या वो मरते नहीं, तो गांधी जी सबसे ज्यादा ताकत लगाते गोडसे को बचाने के लिए कि मैं इसको फांसी पे नहीं चढ़ने दूंगा। तो एक अमन और शांति की बात करने वाले से मैं तो खुद मैंने कहा खुदाई खिदमतगार को कि तुम अपनी एक मौलानाओं की भी विंग बनाओ। This is a different approach which works with religion rather than reject its discourse. Faisal Khan says it's a wider strategy to increase Muslim participation in people's movements. आप हिंदुस्तान में देखिए एक्टिविज्म में दो बड़े लोग हैं, या तो गांधीयन बैकग्राउंड के लोग हैं या लेफ्ट के हैं,
दोनों जगह आम मुसलमान वो दोनों जगह जाते हुए घबराता है। तो मैं चाहूंगा यहाँ आए और उसको सच्चाई पता चले और वो आगे जाए। इस देश में सिविल सोसाइटी में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन नहीं। गांधीवादियों का इस देश में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन विनोबा जी ने गांधी जी की हत्या के बाद बनाया, वहां भी कोई खास नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश भी रहेगी और मैं इस डायरेक्शन में काम भी करूंगा कि खुदाई खिदमतगार में लोग आए। और अगर मैं देखता हूं कि किसी को आरटीआई में इंटरेस्ट है तो वो अरुणा रॉय जी के साथ जाए, किसी को विस्थापन पे काम करना तो वो मेधा जी के यहाँ जाए, और अलग अलग किस्म के लोग यहाँ वो अपनी ट्रेनिंग ले। देखिए मैं He says he's learnt his lessons on the ground. This is still an India where despite a strong left tradition of grassroots work, May Day celebrations never draw the same spontaneous crowds that seasonal or religious melas do. So the Khudai Khidmatgars use unconventional strategies. They take their work to the Urs in Ajmer, to the Deoband Seminary, even to the Mahakumbh. Strategies once used by both the Gandhis, for which they faced their most trenchant criticism. जब कुंभ में हम वो पर्चा बांट रहे थे तो लोग उसको संभाल के रख के पूछते थे हम ये दिन में कितने बार पढ़े। हम लोग जंतर मंतर पे देखते हैं कि हम 1000 पर्चा बांटते तो 900 पर्चे पीछे हमें फिके हुए जमीन पे मिलते हैं। कुंभ में हमने 2 लोगों को सिर्फ इसमें लगा दिया था कि तुम पर्चे उठा के लाओ, तो एक भी पर्चा जमीन पे हमें पड़ा नहीं मिला। Faisal Khan faces his share of criticism, from the Muslim orthodoxy for engaging with Hindu groups, from Hindu groups for starting what they call a Muslim organization, and from the liberal intelligentsia for not breaking the frameworks of religion. It's a tricky tightrope to walk, but for now the Khudai Khidmatgar language seems to be striking a chord. देखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने भी एक बार कहा था कि मैं गांधी जी से बहुत मुद्दों पे मेरा ख्याल अलग है, लेकिन मुझे मालूम है अगर मेरे साथ 1 लाख लोग हैं तो गांधी के साथ 50 लाख हैं। بزرگوار مملکت ما به نام خان عبدالغفار خان. بله شنیدین. چطور نشنیدین؟ تشکر. What do you know about Basha Khan? He was almost very same to Gandhi ji, but he was a Muslim. बादशाह खान जी एमपी कैद लीडर पाते शवी द पख्तनों मशर और पूरा पाकिस्तान द तरक्की द बारगड़े कारन में जी गुनी दी बादशाह खान मशरासी बादशाह खान ए की भी से बादशाह खान फ्रंटियर गांधी में मशरासी ने वाला खान और जो अभी बहुत As Faisal Khan's Khudai Khidmatgars inspired by Badshah Khan work across India, in New York, a Canadian filmmaker, after reading Eknath Easwaran's biography on the great Pathan, spends 21 years of her life trying to bring his story to life. Badshah Khan's life and legacy spans 3 countries. We're talking about India and Pakistan and Afghanistan. And in order to do a good job, I realized that, that I had to spend the time to do the research, pick up some knowledge of the languages, and acquaint myself with the complexities of the region. The thing that drew me the most to Badshah Khan's life, I thought, here is a giant of the human spirit. And this encounter that I had through Easwaran's book, I wanted to share with others. That's a great picture. Yeah, that's Saeed Naqvi. And Saeed was press agent to Badshah Khan. The film acts as an invaluable archive. There's rare historical footage, interviews with friends and family of Badshah Khan and world leaders, other details relatively unknown to wider audiences. There were many epiphanies along the way, and it's when you encounter difficulties you find out who you really are. And I can think of sandstorms, the sand so thick in Khyber Pass where you just wonder if you're going to make it, and you do. Deeply indebted to my cinematographer, Sanjay Agrawal, who is from New Delhi. Helping her bring Badshah Khan to life, a renowned musician, composer, director,
known for his soundtracks to films like The Manchurian Candidate and Splendor in the Grass. I was hoping that I could do something to reflect the spirit of Baja Khan himself, the nobility and simplicity and spirituality, and also to give a sense of all the musics, the many, many kinds of music that have traveled over the Khyber Pass through from what's now Pakistan to what's now Afghanistan, back to India, and back and forth, the extraordinary fluidity and many, many cultures that are part of that wonderful, amazing world. In my latest piece, my piano concerto, I used some elements of what I used in the film and the idea for the last movement. I used a japtal, which everyone in your audience knows is bonk, 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 chicka-ticka-ding, ticka-ticka-ding, donkey-dong, donkey-dong, ticka-ticka-ding, ticka-ticka-ding, gonky-dong, gonky-dong. Terry McLuhan hopes to screen her film for Faisal Khan's newly formed group next month. I am a Hudai Hidmatgar. All God's creatures, no matter from what nook or corner of the world they come, have a claim upon my service. Whenever you should need my services, rest assured, my friends, you will find me by your side.